Let's get clarity with the concepts. Then we will learn how to do that. So we will here, we raise our research question. We find our research problem, that what is the problem in the society after reading the introduction part. Then we do literature review on it. Literature review means, see, I'm breaking the word literature and review. Literature means anything written, anything on which research has been done. And review means I am reviewing it. I am checking it. I am reading it. So I will read all the researches which have done on that research problem or related to that research problem. I will read those research papers and will find research gaps. Gaps means what research has not been done on the basis of that research question. So means research question and research gaps are very much interlinked with each other. Research question is a broad one, and if we narrow it down, it becomes a research gap. And from one research question, there can be a lot of research gaps. एक research question में से आप 4, 5, 6, 7 research gaps भी निकाल सकते हैं. And when we go further, research gaps को और refine करेंगे. When we refine research gaps, we become more specific and we get to research objectives. See, if these three things, research question or research problem is the same thing, research gaps and research objectives, these must be in line, and research question must be very broad, research gaps must be narrower than research question, and research objectives must be very specific, more narrower than the research gaps. आपको ये तीन चीजें तो लानी ही पड़ेंगी to have published paper in a good, to have a quality research. Now we will tell us about the methodology. We all have read methodology, right? In our NET examination, in our BCom, in our masters. Okay, tell me how many of you have read the subject research methodology ever in your life? Please say yes if you have read research methodology. Say yes in the chat box if you have ever read a research methodology in your life. We will clarify it. हम उसको भी clear करेंगे. Research, we will, this research methodology is the heart of a research. Heart of a research. उस पे clarity आनी बहुत जरूरी है. Okay, Jayashri, yes, I read. See, we all have read research methodology, but we don't know, or we have a very little idea how to link it practically in our research paper. I will show you with proper examples how to give a base to your research method. उसकी हर एक की justification कैसे देनी है आपको. You have to justify your research methodology for writing a quality research paper. We will share live examples with you. So after then, we write research methodology. It covers research design, it covers sampling design, it covers study scope, it covers tentative tools and techniques, everything it will cover. Now see, ध्यान से देखिए, in our synopsis or in our research proposal, we write only these 4 steps: title, abstract, introduction, literature review, and methodology. सिर्फ ये 5 चीजें लिखी जाएंगे रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस में, क्योंकि यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो एक फ्यूचरिस्टिक है. आगे का पार्ट प्रैक्टिकल है. एनालिसिस, रिजल्ट्स, डिस्कशंस, दिस इज द प्रैक्टिकल पार्ट. सो टिल रिसर्च मेथोडोलॉजी वी गिव अ ब्लूप्रिंट कि ऐसा होगा. For writing a research paper, we come to analysis. Analysis means we will collect the data, we will analyze the data using analytical tools like PLSM, like R, like SPSS. So there are too much analytical tools depending upon the stream of research. Then we will show what our analysis has given us, the results. We will discuss the results and see, this is the most important section: discussion, conclusion, implications, limitations, and future research direction. For writing a quality research paper, for writing a quality proposal, for writing a quality synopsis, 2 things must be very important. The first one is research question, research gap, research objectives. And the second one is your discussions, implications, and future research directions. See, let us say, I'm again coming back to my example of Maggie. आपने मैगी बनाई, you prepared Maggie, but Maggie is not good.
So क्या जवाब आएगा? What answer you will receive? What feedback you will receive? अरे क्या मैगी बनाई है, खराब, इससे बड़े तो मैं खुद ही बना लेता. Again, if we are writing a research paper and the results or implications are not useful, not good for the society, not practically applicable, the author or the checker will say, क्या research paper लिखा है, इससे बड़े तो मैं खुद ही लिख लेता. Get my point? So research problem ऐसी होनी चाहिए, should be like this research problem that their implications is very much effective. If implications are not good, sorry, जितनी मर्जी बढ़िया research paper लिख लो आप, it will not be accepted in a good journal. The quality is very bad. Fine. Means you are asking ki we have to know the taste of that Maggi like this, then we will make. No, ma'am, I am saying the implications which you give, which you write, and the future directions which you write must be practically applicable. And it will be only possible when you have a practical research problem. Again, the root is linked with the research problem. We will discuss it further in the coming days. After then, we give references. There are a lot of references, styles and all. We will discuss it further. References means there are two types of references. For the amateurs, let me tell you, there are two types of references. One is in-text citation, and the second is full references. In-text citation means when I'm writing the above portions, abstract, intro, LR, methodology, analysis, results, discussions, when I am mentioning some study while writing my paper, then it is known as in-text citation. But for that in-text citation, I have to give full reference at the last of the section references. Let me ask you a very nice question. What is the difference between references and bibliography? Those who are into research, please answer this. What is the difference between references and bibliography? In the reference article also included, and in the bibliography there is a patent and some books. No, ma'am. There's a difference between them. Anyone else will clear you, ma'am? You tried. That's great. You tried giving answer, but I'll clear you. What's the difference between those? Yeah, many of we judge like there is a no difference or there is a very close difference, but we are not clear on what is the difference between these two, right? Means there is some articles, axioms, research papers. So we are giving the reference. Yes, we are taking the reference from this. And if you are writing the bibliography, so inside there is a books available. Okay, ma'am. Okay, fine. Books. Author books. I will refine your answer. Okay, anyone else? Difference between references and bibliography. They're very small kind of difference. References and bibliography. I think in reference we are going to add only those people whose work we are already cited in our work. Okay, sir. And but in bibliography we are also going to include those people who we read the articles but we didn't cited them in our research. That means you are not ethical in writing a research. No, we gone through those papers, but we don't find that much those papers that much valuable that we are going to include in the research work in our review of literature. But we are taking the inputs from them and we are using them as well. Okay, fine, sir. Fine. Anyone else? Yes, sir. We get some ideas from the newspapers or from certain books. So we can add such kind of material in bibliography, and in references portion we use the in-text citations for reference. No, we can add the references for newspapers and articles in our references. Okay, let me answer this question. When I started my research, I was also not clear on this, and my guide, Dr. Gurcharan Singh, he made clarity, very clear clarity, precise clarity on difference between references and bibliography. See, references means anything from which you are writing. If you have taken any idea, you have taken material from any paper and you are using it in your research, you have to cite it. And for every citation, you have to give references. Bibliography means I have not taken anything from that paper.
let us say, I am doing research in mobile banking and I am reading papers of internet banking. There is one paper on internet banking. It gives me an idea, only an idea. I have not taken anything from that paper. It just gives me an idea. It means I need to add that paper in my bibliography. जो आपने साइट किया वो रेफरेंसेस में डालोगे, बट जहां से आपको आइडिया आया, आपने कुछ भी उस पेपर से पिक नहीं किया, कुछ भी पेपर में लिखा नहीं वहां से लेके, that you will write in your bibliography. काफी जगह in many theses I have seen that people इसको mix कर देते हैं references and bibliography को. No, they are different. References means आपने वहां से material pick किया. Bibliography means you have only taken an idea and refine it and use it in your paper. And at last, appendix. Appendix means any additional attachments if you want to attach. Let us say you want to attach a questionnaire, you want to attach a scale. We will later discuss it. What is scale? What is questionnaire? For those who are into research, in appendix, anything you want to add as a supplement material, you can add in the appendix. सर अगर हमने उस पेपर में से एक वेरिएबल लिया है तो वो रेफरेंस में आएगा? Yes, बेटा आपने पेपर में से वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल लिया, नो वो रेफरेंस में नहीं आएगा. वेरिएबल, अगर आपने वेरिएबल के रिलेटेड कोई भी वहां से लाइन पिक करी है तो वो रेफरेंस में आए. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमें इस पेपर से आइडिया हो रहा है कि इन्होंने इस वेरिएबल को स्टडी किया है तो उसका एक वेरिएबल हमने भी उठा लिया अपने पेपर के लिए. नहीं 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 मैम, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा. लेट अस से मैंने एक वेरिएबल लिया एटीट्यूड. ओके, आपने पेपर लिखा एटीट्यूड पे, वो कॉन्टेक्स्ट में था मोबाइल बैंकिंग के. ओके, इंटरनेट बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट में था वो. मैंने आपका पेपर रीड किया, मैंने देखा कि आपने ना उसमें एटीट्यूड लिया हुआ है. मैंने स्टडी करनी है मोबाइल बैंकिंग पे, आपने करी है इंटरनेट बैंकिंग पे. मैंने वो वेरिएबल पिक कर लिया, एटीट्यूड ले लिया. इसमें आई विल नॉट साइट योर रेफरेंस, क्योंकि मैंने आपके पेपर में से कोई भी लिखी हुई लाइन नहीं ली है. अगर मैंने एक भी लाइन लिखी हुई आपके पेपर में से लेके उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में लिख दिया, आई हैव टू साइट योर पेपर. क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं? बिकॉज आपने एटीट्यूड, लेटर से एटीट्यूड पे आपने एटीट्यूड वेरिएबल लिया था, वो मैंने ले लिया. ऐसे कितने सारे हजारों पेपर हैं. एटीट्यूड इज अ साइकोलॉजी, उससे पहले 1000 पेपर साइकोलॉजी पे लिखे हैं जिसमें हजारों लोगों ने एटीट्यूड लिया हुआ है. अगर ऐसा हुआ फिर तो मैं साइटेशन करता ही रह जाऊंगा, क्योंकि उन सब ने एटीट्यूड लिया हुआ है. समझे मेरी बात? तो सिर्फ अगर मैंने उसके अंदर से कोई लाइन को पिक किया, ऐसा कुछ किया, तो मैं उसको रेफरेंसेस में लिख सकता हूँ. ओके ओके सर. यस. Sir, you mean to say that paraphrasing? यस, पैराफ्रेजिंग जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम पैराफ्रेज करें. कई बार हम क्या करते हैं कि उसको पिक करके अपने कॉन्टेक्स्ट में बदल लेते हैं चीजों को. पैराफ्रेजिंग आप कह सकते हो, बट थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा पैराफ्रेजिंग. जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ब्रॉडर है वो, उससे पैराफ्रेजिंग को इंक्लूड कर सकते हैं उस चीज में. लेटर से मैंने एटीट्यूड के ऊपर कोई 2 लाइन लिखी थी और मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको लिख के और चेंज कर लिया. आई हैव टू साइट योर पेपर. ओके, टाइम हो चला है, थोड़ा सा रह गया है, इसके बाद हम डाउट सेशन लेंगे. प्लीज रेडी विद योर डाउट्स. ये एक छोटा सा मैंने एक मिमिक कोड है जो आप याद कर सकते हो, जो हमने अभी प्रोसेस पढ़ी पूरी रिसर्च की, कि पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर लिटरेचर रिव्यू आएगा, फिर मेथोडोलॉजी आएगी, फिर एनालिसिस, रिजल्ट्स, डिस्कशंस, रेफरेंसेस. इस चीज को आपको क्रैम ना करना पड़े, तो इसके लिए एक हमारे पास फॉर्मेट है विच इज नोन एज इमराड. सी ये एक फॉर्मेट है जिसमें कि हमने पूरे रिसर्च पेपर के ब्लूप्रिंट को दिखाया हुआ है. सबसे पहले टाइटल, फिर एब्स्ट्रैक्ट, फिर कीवर्ड्स. So IMRAD means I stands for introduction, where you will write opening your, it opens with your research question. It covers your literature review, it covers your question, or you can say your objectives. Introduction, I, IMRAD. M stands for methods, means research methodology, what you are going to write. R stands for results,
The analysis, in analysis, what you have find, the results you show here, IMR. A means and D stands for discussions. Discussions means here you will mention everything. Your conclusion, your discussion, your limitations, your future scope. After then, references and supplementary material means appendix. Okay. Now this is the precise explanation of IMRAD. ये मैंने आपके लिए लिया है. ये this is the very important slide. You know, आपको पता होना चाहिए कि हर चीज में क्या क्या include करना है, क्या नहीं करना है. When I was writing my research synopsis, काफी जगह पे ऐसा हुआ कि मैंने जो पार्ट इंट्रोडक्शन में डालना था वो स्कोप में डाल दिया, जो स्कोप में डाला था वो ऑब्जेक्टिव में डाल दिया. आई वाज वेरी अनक्लियर ऑन दैट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है. सी इमराड में आई स्टैंड फॉर इंट्रोडक्शन. इसमें क्या आएगा? करंट स्टेट ऑफ नॉलेज विद रेफरेंसेस. यू विल टेल कि कितनी रिसर्च इस पे हो चुकी है एंड एट दिस स्टेज वो कितना है और फ्यूचर में क्या, थोड़ा सा उसका एक आपको ब्रीफ में बताना पड़ेगा. Knowledge gaps means research problem. You will tell this is my research problem. It will come into introduction. Primary and secondary objectives means your research gaps, your research objectives comes into introduction. Then methods. Methods means what is the population of your study, what is the sampling design, what is the research design, what is the scope of your study, what are the tests you will use. This will all come into methods. Results means the results which you found. See, describe results. This is a very important line. Describe results, don't interpret. Why? Because interpretation will go to the discussion part. You will just tell them कि मैंने A का B पे इफेक्ट चेक किया और इफेक्ट क्या आया, 5 आया, 7 आया, 10 आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया. आप सिर्फ इतना बताओगे. इंटरप्रेट और डिस्कशंस उसको हम लास्ट पार्ट में करेंगे. वी विल गिव द रीजनिंग कि व्हाई इट कम्स पॉजिटिव, व्हाई इट कम्स नेगेटिव, व्हाई द इम्पैक्ट इज लेस, मोर, व्हाटएवर एल्स. Discussions will be in the last part. In the results, you will just show your numeric values only. Use tables, figures, illustrations. Every method described should have a dedicated result. And in discussions, you will tell the reason, you will give the reasoning of why there is a positive relationship between A or B. Why the Maggi taste is not good, or why the Maggi taste is so good. You will discuss it in the last part. You will compare your findings with the previous literature. You will tell this, yes, my mother has made Maggi 1 week before and it was not that much good. My father has made Maggi 2 days before. It was not that much good as I prepared it. See, I'm just taking an example of Maggi. I'm not taking examples of variables. You will say कि मैंने चेक किया था कि मैं मोबाइल को अगर चार्ज पे लगाता हूं तो वो कितने दिन में चार्ज होता है. And you will compare it with the other results. कि मैं आईफोन चार्ज पे लगाता हूं तो कितने दिन में चार्ज होता है, अगर मैं सैमसंग चार्ज पे लगाता हूं तो कितने दिन में चार्ज होता है. So you will compare your results with the other results, and you will give a summary and as well as your contributions, that what your study will contribute and the future implications, that what are the scope, what future research, how future researchers can extend this study. इस research को आगे कैसे लेके जाया जा सकता है वो आप बताएंगे. So this IMRAD format is very important for your research. Okay, I think we are done with the time. Hope you understand the things. Any questions from your side? Please don't hesitate. कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का हो, don't hesitate. If you ask one question 10 times, no issues. But please ask question. Please ask question. सर जो सिनॉप्सिस है उसमें हमें ये भी बताना है कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, क्या टूल्स यूज करेंगे. एकता मैम, मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ. इससे नेक्स्ट स्लाइड जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये ही है जो आपका करेगी. सी मैम, एकता मैम, यहाँ तक हो गया है. हम ये स्लाइड पढ़ेंगे. कल फर्स्ट स्लाइड यही होगी, फॉर्मेट ऑफ रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस. आफ्टर दैट वी विल शेयर व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ रिसर्च प्रपोजल, व्हाट इज द फॉर्मेट
then we will use what are Boolean operators. It's a different part. Next point is what is the format of writing a research proposal or synopsis. जो आपने आंसर क्वेश्चन पूछा मैम वो कल कवर हो जाएगा आपका यहाँ पे. और सर एक और क्वेरी है. यस मैम. सर जो वो मेटा एनालिसिस है और जो सिस्टमेटिक रिव्यू है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे हम दोनों में ही ये स्टडी कर रहे हैं कि अभी तक क्या हुआ है. एक था मैं मेटा एनालिसिस इंक्लूड सिस्टमेटिक रिव्यू. मैं आपको बताता हूँ कैसे. आप बहुत सारी स्टडीज पढ़ेंगे सिस्टमेटिक रिव्यू में, बहुत सारी स्टडीज पढ़ेंगे मेटा एनालिसिस में, बट मेटा एनालिसिस अपने आप में एक एनालिटिकल टूल है जिसमें कि आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो उस रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए. इन सिस्टमेटिक रिव्यू आप कोई सॉफ्टवेयर नहीं यूज करोगे, कोई एनालिसिस नहीं करोगे, सिर्फ आप लिटरेचर रिव्यू को रीड करोगे और बताओगे कि ऐसा 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 हो चुका है, ऐसा 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 हो सकता है, और ये इंटरलिंकिंग है उन पेपर्स के बीच में. बट मेटा एनालिसिस में आप सब पेपर्स को पढ़ोगे, सबका सैंपल साइज निकालोगे, वेरिएबल्स को जॉट डाउन करोगे, उसको एक टूल में डालोगे, वो रिजल्ट इंटरप्रेट करेगा, आप उसको फिर आगे इंटरप्रेट करोगे कि दो वेरिएबल का रिलेशनशिप जो है वो ये है. बेसिकली मतलब ये होता है मेटा एनालिसिस का. मैं आपको आई एम गिविंग अ रीजन व्हाई वी डू मेटा एनालिसिस. लेट अस से कोई भी दो वेरिएबल है ए एंड बी, कोई भी दो वेरिएबल. मैं कहता हूं कि रूम टेम्परेचर एंड एसी. ओके, अभी नॉर्थ इंडिया में रूम जब हम एसी 23 पे चलाते हैं तो रूम ठंडा नहीं होता है. 23 पे अगर साउथ में एसी चलाते हैं तो रूम बहुत ठंडा हो जाता है. अगर हम यूएस में एसी चलाते हैं 23 पे तो रूम बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है. राजस्थान में अगर एसी चलाते हैं 23 पे तो ज्यादा ठंडा नहीं करता है. गेटिंग माय पॉइंट. कुछ जगह पे लोग कह रहे हैं कि एसी और रूम टेम्परेचर पॉजिटिव लिंक्ड है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि ऐसा होता है, कुछ कह रहे हैं नहीं होता है. ऐसी 1000 स्टडीज हो चुकी हैं. नाउ यू डू मेटा एनालिसिस. आप बताते हैं कि 1000 स्टडीज का मिला के एक कंक्लूजन क्या है, होता है या नहीं होता है. अगर होता है तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ. 0 to 1 में स्ट्रेंथ बताते हैं आप कि पॉइंट सब स्टडीज मिलके कह रही है कि वो 0.6 तक उसको अफेक्ट करता है. तो दिस इज द पर्पस ऑफ मेटा एनालिसिस. आई होप इट्स क्लियर. देखता मैम आई विल शेयर a category research paper I have written on meta analysis. I will share with you. If you go through that, a very precisely written paper, आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल आराम से. From that you will get to know what is meta analysis. Any other question? Okay. Sir, I have one question. Yes sir, please sir. जैसे सर आपने बताया कि रेफरेंसेस में जहाँ से हमने कोई आइडिया लिया है, ठीक है, और बिब्लियोग्राफी में हमने कोई आइडिया नहीं लिया, तो मतलब ये चीज की क्लैरिटी नहीं हो पाई कि जब ये. हरप्रीत सर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. रेफरेंसेस में वो चीज आएगी, लेट अस से एकता मैम ने कोई रिसर्च पेपर लिखा किसी भी चीज से, लेट अस से कोरोना पे लिखा जी. मैं भी कोई रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, कोरोना के ऊपर ही लिख रहा हूँ. अभी उन्होंने ना क्या कुछ बैक्टीरिया के बारे में कुछ बताया हुआ था, 5-6 लाइंस लिखी हुई थी. मैंने उसमें से 2 लाइंस पिक करी, उसको पैराफ्रेज किया और अपने कॉन्टेक्स्ट में लिख दिया. जी. मैंने उनके पेपर में से 2 लाइंस पिक करी, उसी को लिखा. मींस ये रेफरेंस है. रेफरेंस मतलब देखो, रेफरेंस का मतलब समझो, मतलब मैंने उनके पेपर को रेफर किया, मैं उनके पेपर पढ़ा, रेफर किया. रेफरेंस का मतलब ये हो कि मैंने उनके पेपर को रेफर किया. एक पेपर आपने लिखा था और आपने पेपर लिखा हुआ था लेटर से डायबिटीज पे. अभी आपने डायबिटीज के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया पे बात की हुई थी. मैंने बैक्टीरिया के बारे में रीड किया और मुझे वहां से आइडिया जनरेट हुआ कि क्यों ना ये चीज मैं कोरोना पे करूं. राइट? अभी मैंने आपके पेपर में से कुछ भी पिक नहीं किया, सिर्फ आइडिया आया मुझे वहां से. दिस इज कॉल्ड एज बिब्लियोग्राफी. यस. क्लियर हुआ? यस. ओके. यस, एनी अदर क्वेश्चन? सर वही मेरा जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था. यस मैम. Actually, my subject is mathematics, and I'm looking for. Hello, sir. But this concept is very.
Big deal. Pardon, ma'am, your voice is breaking. Please pardon. Actually, my subject is mathematics. Okay, ma'am. So first part is the same for every subject. Yes, ma'am. It's about the research proposal, but what about the research paper? Ma'am, the base. Okay, you answer me one question. Okay, where do you stay? What is the state do you stay? Where do you stay? In which state do you stay? State. You have muted your mic, ma'am. Unmute yourself, please. From Maharashtra. Maharashtra. Ma'am, I am from Haryana. Yes. I have been in Mumbai, but you know the base of the building structures are same in Haryana, in Maharashtra, in Pune, in Punjab. But we are paying a lot of money for architecture. Yes, ma'am. But I'm telling you, if the base is not strong, you will not able to write any research paper in any stream. Whatever is the stream. I'm struggling actually in this subject. That's why Ma'am, I am it's okay, not. sir. No problem. I am not going to discuss the analytical portion because it is different from. It depends on the discipline wise. There are many, there are many law students in our presentation. There are a lot of commerce students. There are management students. I am just taking the normal examples. I am not specifying it to any discipline area. But when you come to the base, it will be same. It is not interdisciplinary. It is common for all. So this is where you can strengthify your base. If it is strong, yes, you after 10 days, you will be able to learn too much things from this workshop. Just have patience. Just have patience. This is the very introduction because there are new students also. They don't know even R about the research. So the first class was very introductory, but from the third class, we will learn how to find a research So gap. I have a question for 10 days. I'm just asking. That's great, ma'am. That's great. Patience is the best policy. That's great, ma'am. Thank you. Yes, any other question? Sir, I had a question about Yes, researching. please. Sir, am I audible? Yes, you're audible. Okay, sir. So I am a law student and most of my research work revolves around legal researching in various journals. So I write articles revolving around those law Okay. journals and Okay. legal researching. So Mhm. my question was that my papers tend to get more descriptive than analytical. Mhm. So how do I increase that analytical value of my paper? You are into more descriptive research than analytical, right? I mean, my papers tend to get more descriptive and I'm Yes. not able to provide a proper analysis. Okay. See, Ojas, your discipline is law, right? So law is more linked with descriptive research. In research methodology, we will discuss the types of research designs. One is descriptive, one is exploratory, one is explanatory. So legal law is a subject which is more descriptive in nature. But for improving your research, there are a lot of descriptive analytical tools. You can learn those. Let us say I'm giving an example. I have written one paper by using the data on Python. There I have not used any quantitative terms. So it's a very good opportunity for you because a lot of data is available everywhere in the internet. You can extract the descriptive data using descriptive tools and then try to analyze your data. It will give you a push in your research career. Yes, in analytical part, we will share what are the tools which can be used in descriptive research, tools which can be used in quantitative research. Okay. Hope I Okay, sir. answered your question. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Yes, anyone? See, if you are not asking any question, means there are two things. The first is everything is clear. The second is everything is clear. So I request you, I need at least 10 questions from every one of you. Ask questions. The more you ask, don't hesitate. Ask in any language, in Hindi, English, Punjabi, any language, please ask question.
clarify your doubts. Sir, I have a question. Yes, yes. हाँ जी सिमरन. जब आप बोल रहे थे कि आपको रिसर्च गैप ढूंढने के लिए रिसर्च जो भी आपको रीड करने हैं, रिसर्च पेपर्स या प्रीवियस जो भी आपके पास लिटरेचर रिव्यू करने के लिए, हाँ जी. तो जब जैसे मैं हूँ, मुझे एटलीस्ट उसके बारे में आप जैसे कह रहे थे यार भी पता नहीं है, तो हम कैसे रीड कर सकते हैं उसको, कैसे फाइंड आउट करें कि हाँ ये चीज हो सकती है? क्योंकि यूट्यूब पे कई कहते हैं कि आप गूगल स्कॉलर का यूज करो, बट हमारे पास एक पर्टिकुलर वर्ड होता है और उस वर्ड पे इतना बड़ा टॉपिक फाइंड आउट करना, दिस इज नॉट पॉसिबल. सीमा जी, अभी आप आज का दिन रुक जाइए. फ्रॉम टुमारो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे. सी आई एम ब्रिंगिंग टू यू द वेरी प्रिसाइजनेस ऑफ रिसर्च. आपको सब बताया जाएगा. गूगल स्कॉलर कैसे यूज करना है, साई हब कैसे यूज करना है, कैसे वर्ड को सर्च करना है, किस वर्ड को सर्च करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, रिसर्च गैप कैसे फाइंड आउट करना है. वी आर हैविंग दैट डिस्कशन इन आवर फ्यूचर क्लासेस. सब डिस्कस किया जाएगा. जस्ट हैव पेशेंस. ओके, आपका ये आंसर आगे वाली परसों वाली क्लास में कल सॉल्व हो जाएगा. ओके, थैंक यू तब सर. तक वेट कीजिए आप. हाँ जी. सर आई हैव अ गेम. हाँ जी अर्पित बोलिए. जैसे सर हमें हमारे गाइड बताते हैं कि आप अभी पहले वो उनका ये होता है कि आप नए वेरिएबल्स देखो, ओके. कि जो नए वेरिएबल्स होते हैं देन वी विल डेवलप अ मॉडल. हाँ जी. तो मतलब इस चीज में या तो नए वेरिएबल्स होते हैं जहाँ हम कोई ऐसा लिंक लेके जाते हैं कि चलो इसका इम्पैक्ट इस पे है, ऐसा ऐसा करके कुछ लेके जाते हैं, इस पे तो रिसर्च हुआ है, इस पे भी काम हुआ है. सो व्हाट इज द नोवेल्टी ऑफ एन आइडिया? दैट्स अगेन इशू. हरप्रीत, जो आपने बताया, आई नो दिस इज इन प्रैक्टिस, बट हाँ, जो हमने पढ़ाया आपने मिस कर दिया. यू आर नॉट फाइंडिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. यस. दैट्स व्हाट. इसीलिए सबसे पहला स्टेप रिसर्च का यही है कि मुझे भूख लग रही है, दैट्स व्हाई आई वांट टू ईट मैगी. अभी भूख ही नहीं लगी है तो क्या खाऊं और कैसे खाऊं? आई डोंट हैव एनी आंसर. यस. पहले भूख तो लगे, तो प्रॉब्लम तो ढूंढो पहले. दिस इज द प्रॉब्लम. यही प्रॉब्लम है कि लोग प्रॉब्लम ही नहीं ढूंढते हैं पहले. यस. मॉडल नहीं बनाओ. सर, एक्सक्यूज मी सर, आई वांट यस टू मैम. इंटरप्ट. यस मैम. आपने इसके ऊपर मेरे को अभी जस्ट याद आ गया, मतलब जस्ट मुझे थोड़ा सा ओपन हुआ. हाँ जी. आप बोल रहे हैं कि भूख तो पहले लगनी चाहिए. अभी हमें तो भूख है लेकिन मैगी खाना चाहिए, ये आपने बताया, बट आई वांट टू ईट. यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है. यस मैम, भूख लग रही है. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट किस चीज की भूख लग रही है. कहीं प्यास तो नहीं लग रही मुझे. पानी पीना है, मैगी खानी है, रोटी खानी है, दाल खानी है, क्या चीज की क्रेविंग हो रही है? राइट. क्या चीज से मेरी जो क्रेविंग है वो शांत होगी? क्या वो पानी पीने से हो जाएगी या रोटी खाने से? मेरे गाइड ने मुझे एक टेक्स्ट मतलब एक बुक दिया था, तो बोले कि ये पहले तुम पढ़ो, फिर इसमें से आपको कुछ समझ में आएगा. ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ इंजीनियरिंग के बच्चों को, बट स्टिल not able to finding what they want to listen from me. Then that's why this is the main reason why we are conducting this course. This is the main reason behind that course. Yes sir, yes. You will get clarity. I'm just discussing. I don't want answer right now, Yes. but I have like that questions in my mind. Yeah, that's fine. You can clarify every question here, man. Every question. Yes, Harpreet. Anything else? Yes, sir. I hope all questions will clear in the ongoing session. तो बेटा अभी रिसर्च अभी हम कल ढूंढने, we will learn how to find a research problem. जब वो आप सीखेंगे, आफ्टर देन आपको वो इशू नहीं आएगा जब आप बोलोगे मॉडल्स लेके आओ, ऐसा करो, वैसा करो, वो प्रॉब्लम आपको फेस होगी. ठीक है? Yes. Okay. Anyone else? Any question? Ask as much questions as you want, as much as. Yes sir, I have lot of questions sir. Yes ma'am, please ma'am. एक्चुअली अभी जो गाइड जो होते हैं ना, वो पूछते रहते हैं कि आपने क्या पढ़ाई किया. अब हम जब उनको दिखाते हैं तो उनको ये नहीं चाहिए होता है, कुछ और होना चाहिए होता है. मतलब शायद हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं है कि हम उनसे बात कर सके. एक्चुअली प्रॉब्लम में कम्युनिकेशन भी है. Ma'am, I will answer your question, but not now. Surely I will answer your question कि how to handle your guide.
Sorry, Ismani is the guide here. और डर भी बहुत लगता है Sorry गाइड से for my बोले कि words. Sorry for my words, but नहीं, नहीं, yes, sorry. we will discuss how to communicate with guide. We will discuss it later, not in today's session. How to communicate with your guide. और Any- अगर कुछ Any ये problem related to नहीं भी today's होता, session, you can ask me. मैंने तो बस मेरा तो सर्टिफिकेशन करना ही करके नहीं मैंने ये ज्वाइन किया था कि मे भी मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ मिलेगा, और अगर नहीं भी मिलता है तो मुझे ऐसे लगता है कि इधर मतलब है उतने सारे लोग थोड़े से No, ma'am, investment in you knowledge. can suggest also कि you can do one thing, this one and this one, No, so ma'am. definitely I will do. Investment in knowledge gives you the best return. Just ask. Uh, Okay, there are some questions. Query, sir, I am also a student of law, and what was my question? The same has been asked, so I'm confused. Okay. Yes, Ritu ma'am, you have text. Hello, sir. Yes. Anything, please. Anything, please. हेलो सर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सर जैसे आपने एग्जांपल दी है कि कोरोना के ऊपर हम रिसर्च करते हैं, तो क्या सिनॉप्सिस की जो हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं उसमें अबाउट कोरोना लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग से, कि कोरोना कहाँ से आया है इन सिनॉप्सिस? मेरा क्वेश्चन ये है, आप लिख क्या रहे हैं? रिसर्च पेपर या सिनॉप्सिस सर, सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस लिख, आपको देना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री देनी पड़ेगी उसमें। कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? यस, अब वो वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है। रितु मैम, कीप योरसेल्फ, वॉइस बफर हो रही है। हाँ जी, लेट मी आंसर। जब आप बोलेंगे फिर अनम्यूट करना अपने आप को। रितु मैम, आप सिनॉप्सिस लिख रहे हैं तो आपको ब्रीफ देना पड़ेगा कि मतलब कि बीमारी है या फिर मेडिकल कहाँ से स्टार्ट हुई, कोरोना सा, आपको इंट्रोडक्शन सेशन उसमें देना पड़ेगा। उसमें अराउंड आधे पेज का, एक पेज का, कि इसका हिस्ट्री क्या है, कि शुरू में आप दीजिए कि वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है, या फिर वहां से स्टार्टिंग हुई। धीरे धीरे नैरो डाउन करते 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 उसको अपने टॉपिक पे लेके आइए। पहले ब्रॉड बताइए कि लेटस से कि बीमारी क्या होती है, बाद में बताइए कि अच्छा बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, फिर थोड़ा और नैरो डाउन कर दिए कि कुछ कैटेगरीज होती हैं, कुछ आपको फ्लू करते हैं, कुछ नहीं करते हैं इफेक्ट, फिर और नैरो डाउन कर दिए कि उसमें से ऐसा भी होता है, कुछ सेवर भी होते हैं, फिर स्पेसिफिक कर दीजिए कि एक उसमें से कोरोना भी है। Now you can unmute yourself and ask. सर जैसे मैंने बहुत सी थीसिस पढ़ी हैं इस रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू अबाउट कोरोना वायरसेस, तो जैसे मैं रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढती हूँ ना, तो जो मन में सोचते हैं कि इसके लिए ये रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस पे हमें थीसिस मिल जाती है कहीं ना कहीं। Ritu ma'am, we will discuss कि how to search the novelty of a research question, कि आपका रिसर्च क्वेश्चन कितना नया है, कितना एक्सप्लोर्ड है, कितना अनएक्सप्लोर्ड है, हम इसको परसों रीड करेंगे। अगर आप वैसा करेंगे आई एम श्योर फिर आपको ऐसा नहीं होगा कि ये इस पे थीसिस मिल रही है आपको। अगर कोई रिसर्च प्रॉब्लम थीसिस लिखी हुई है किसी रिसर्च प्रॉब्लम पे, तो सॉरी, वो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम नहीं रह गई है, वो बहुत ज्यादा पुराना टॉपिक हो चुका है। तो नया टॉपिक रिसर्च करना है, वी विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेस। Okay, sir, thank you. Sir, I had a question regarding plagiarism. Yes, Ojas, please ask. Okay, sir. So, sir, in many journals, there are this limit given of plagiarism around 10% or 15%. Yes. But there are some journals where they accept zero plagiarism. Now, if we write even if we write some words like the Supreme Court of India, it shows plagiarism on softwares like Turnitin or Plagiarism X or those premium softwares. So how do we tackle this problem? I mean, they are saying that they don't accept plagiarism. Got it. Or just 0% plagiarism is not possible. Again, so do they have this soft plagiarism limit or? Yes. See, even good quality papers, I am telling you about A star, A categories, they also allow you plagiarism to some extent. Not 0%, not 1%. They allows you to 8%, 7%, 10%. Okay, tell me which category journal you are telling me about 0% plagiarism. A star, A, B, C, Scopus, UGC, which journal you are asking me about? Sir, to be honest, I am quite new in this legal field. Just ऐसा नहीं होगा कि 0% plagiarism हो. Sorry, it is not possible.
ऐसा हो सकता है कि वैसे नॉट पॉसिबल कि 0%, तो वो कुछ लिमिट आपको देंगे। रेफरेंसेस में तो फ्लैग आएगा ही, कुछ टेबल्स में, कुछ वर्डिंग्स में, या फिर कुछ डेफिनेशंस में आपको फ्लैग आएगा ही। So, sir, should we keep a soft limit of around 5 to 10% in mind when we? Yes, 5 to 10% is good. इसके ऊपर मत जाना, 10% is good. इतना आप रख सकते हैं। That you have learned something new from today's class. Today's class is very basic class. Tomorrow we will learn how to use research, how to use Google Scholar, how to use Sci-Hub, how to search for a topic. We will learn Boolean operators. It's a very new term for you. That how to specify your research. जो चीज हम 1 घंटे में सर्च करते हैं इंटरनेट पे, उसको हम 5 मिनट में कैसे सर्च कर सकते हैं with the same and specific output. Tomorrow we will learn this. Okay, let's end the session now. I hope no questions left. Okay, done. So I am ending the today's session.